इसके लिए फिर से स्टार्ट कर. Okay, today we are going to learn about hydrocarbons, and do you know about that cyclic hydrocarbon? Do you know it? Okay, then today we learn here cyclic hydrocarbons. Can one carbon atom can form cycle? Two carbon atom? Three carbon atom? Yes, it can form cyclic hydrocarbon. When we write IUPAC name of cyclic hydrocarbons, then we have to write cyclo in prefix. क्या लिखना है? Cyclo. Cyclo and then alkane. The name of the alkane. We know how to find name of the alkane by the number of carbon atoms. Okay. If here we have 3 carbon atom in cyclic form, then how many carbons or hydrogens are there? 6 hydrogen are there. Why? Because around the carbon there should be 4 bonds, single bonds. What is the formula? CH3S6. Name? Cyclopropane. This is a cycle. But this formula is also have another structure. Which one? Propene. प्रोपीन है क्या? प्रोपीन ना? sorry. Okay, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. What we called it? Same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula but different structural formula. It is called as isomers. क्या कहते हैं? Isomers. Okay? चलो याद रखना. This is saturated cyclic hydrocarbon. Okay? This is saturated cyclic hydrocarbon. Saturated shows the single bond in the carbon-carbon atom. What if we use here unsaturated? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, अल्कीन एंड अल्काइल. साइक्लोअल्कीन. ठीक है? In our syllabus, only cycloalkenes are there. Okay. Then first member of cycloalkene is cycloethene. Cycloethene. Ethene होगा या प्रोपीन होगा? प्रोपीन. 1. Okay. 1 2 3 4 1 hydrogen is here.
1 2 3 4 1 hydrogen is here, 1 2 3 4 2 hydrogens are connected to this single carbon atom. Okay, what is the formula of cyclopropene? C3H4. With the help of this structure we can write molecular formula. Okay, as we learn here, hydrocarbons, okay, they are in two type: open chain or straight chain hydrocarbon, and another is closed chain hydrocarbon. It is also called as cyclic hydrocarbons. और यहाँ पे here open chain hydrocarbon and branch chain hydrocarbon. Here they are saturated and unsaturated. Okay, here also क्या रहेगा, क्या आएगा? Unsaturated and saturated. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे हमने जो है पूरा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे, हाँ, या पूरा हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ पे देखा है, ओपन चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तक ही पढ़ना है. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया था हमको यहाँ पे, एक कुछ याद है? ओके, ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था हमें हेक्सिन का, वो याद रखना. किसका? हेक्सिन. क्या है? C6H6. Alternate double bonds are there. 1 2 3 4 single carbon atom, hydrogen atom are attached to the carbon. ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके बारे में पूछा जाता है कि कैसा हेक्सिन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, या उसका फार्मूला, कुछ भी इस पर पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है. तो ये किस में आएगा? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ओके, ये शॉर्ट में समझ में आ गया ना? ये अगर समझ में आता है तो पूरा हमें, सॉरी बेंजीन. ठीक है, ओके, बेंजीन. ठीक है, याद रखना बेंजीन पे क्वेश्चन पूछा जाता कि अल्टरनेट बॉन्ड होता है. अब हमें सीखना है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ब्रांच चेन हाइड्रो. तो बिफोर दैट वी हैव टू लर्न हियर हाउ अल्काइल और अल्किल, whatever you call it, alkyl group is formed. Alkyl group, do you know it? Alkyl group, when one hydrogen is removed from alkane, then it will become alkyl. For example, क्या बनता है? CH3. मीथेन का क्या हो जाएगा? मिथाइल. ओके, C2H5 क्या हो जाएगा?
इथेन, इथाइल। हैव गॉट इट? अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट, कौन सा भी एक एग्जाम्पल लेना है जिसमें ब्रांच फॉर्म हो सकती है। सिंगल ब्रांच फॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। देन डबल, नहीं। ट्रिपल, सॉरी 3 कार्बन, नहीं कर सकता। आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे ये ब्रांच है क्या? इट इज इन स्ट्रेट लाइन, सिर्फ वो बेंड किया है। ओके, देन वी हैव टू नीड 4 कार्बन एटम हियर। ओके, तो 4 कार्बन एटम जो जिसमें जो अल्केन में आते हैं उसका नाम क्या है? ब्यूटेन। ओके, तो उसका ब्रांच फॉर्म करना है। मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन निकालूंगा, हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम आएगा एन ब्यूटेन। क्या आएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, if we write here 3 carbon in a straight line and 1 carbon here, what happen here? This carbon atom have only 3 hydrogen atom, so it will become alkyl group, and that is 3 carbon atom means what? Methyl. ये क्या है? मिथाइल। ओके, ये मिथाइल ग्रुप है। तो वी हैव टू सी हियर टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वेयर दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन विच कार्बन एटम, सेम एज वी लर्न बिफोर, एंड वी नो दिस कार्बन एटम हैव मिनिमम नंबर। सो 1 2, it means it attached to the second carbon atom number. So 2 dash methyl start with small letter methyl, and in straight line it is a propane, 2 methyl propane. This is the IUPAC name of that branch chain of butane, branch structure of butane. Okay, समझ में आ रहा है? These are the 2 branch chain form. Same molecular formula, different structural formula. Isomer. N ब्यूटेन, इसको इसका IUPAC नेम क्या है? ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम है, इसको कहेंगे हम isobutane. Common name. These are the common name. These are the IUPAC name. This is the example of butane. Another one. How many isomers can form by pentane? C5H12. Okay, first N pentane, it means normal, this is common name, normal pentane, or this is IUPAC name. This is common name, this is IUPAC. Both name we have to know. Then it is only in straight line. Okay, this is carbon skeleton. This is a N pentane. IUPAC name pentane. What if we branch it here? What is the name of this structure? This carbon atom shows which group? Methyl. On which carbon atom? Second. If you count from left side, it will become
it will on third, and from left side it will on 2. Yes, 2 dash methyl straight line propane. Sorry, 4 है ना, butane. Okay. For write this alkane name, we have to write which carbon are in straight line. Okay. And another one structure can form here. It is also called as isopentane. Common name it is. Okay. Another one structure it can form here. 2 methyl group is attached to 1 carbon atom or second carbon atom. 1 2 3 second carbon atom को 2 methyl group attached है. So what we have to write here? 2, 2 position of that methyl group, or how many? There are 2. So dash dimethyl propane. These 3 are isomer of pentane, and this is a branch chain. These are its, and in this way we can write its IUPAC name. Any doubt is here? Do you understand? Do you know functional group? Functional group जानते हो क्या? Atom or a group of atom, it is a which make a carbon compound more reactive. Okay, when it is attached to the parent alkane. Group atom or a group of atom अगर अटैच होता है किसी पेरेंट अल्केन को, तो वो क्या फॉर्म करता है? उसको क्या कहेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप. क्या कहेंगे उसको? जो 10th CBSE में पढ़े उतने ही पढ़ेंगे. चलो, सबसे पहला कौन सा है? हाँ, तो हेलोजन को क्या कहेंगे हम? हेलो अल्केन. क्या कहेंगे? क्या है इसका फार्मूला? सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड R. व्हाट दिस सिंगल बॉन्ड, इसके पहले हम लिखेंगे R. R मीन्स व्हाट? R मीन्स अल्किल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप. If we attach this alkyl group, then it will become haloalkane. First, which one? haloalkane ना, उसके बारे में देखते हैं. चलो, CH3 single bond Cl. तो to write the IUPAC name of this structure or this formula, we have to write this halogen in prefix. Chloro, bromo or iodine. Here chlorine is attached, so we have to write chloro. Okay? And from this remaining carbon atom, we can find the parent alkane. Then 1 carbon is there, so methane is chloromethane. Second one, C2H5 single bond Br. Bromo, good. Once one thing is there, we have to
check where the bromine is attached or bromide, if this functional group bromo is attached. So we have to write that position of this bromine. It is attached to the first carbon atom. Then 1 bromo ethane. 1 bromo ethane. Third one example, some butane. Iodo butane. If iodine attached is here, then what we have to write? 2 iodo butane. Position of this haloalkane. Position of this haloalkane. Then second functional group, alcohol. R single bond. R single bond OH. Okay. Example first. What? Methanol. Okay. What? CH3 single bond OH. Okay. 1 single bond O, single bond H. In this way. Second, पेंटानॉल लिखते हैं. What is the name of this structure? Pentanol. Okay. Then more correct, if you want to write more correct, then write the number of this position of this group. 1, 2, 3. Then pent 2 pentan 3 OL. Pentan 3 OL. Okay. Another thing is, जो अल्केन है, remove this E and write OL. If OH group is attached, then remove E from the alkane and join OL. Okay, simple trick. This is also correct and this is also correct. If you don't remember this, then write. Another thing, ये जो है, this is a which group? This one hydrogen is removed, then it will become alkyl group. तो इसका common name methyl, which group is attached? Alcohol. We can, methyl alcohol is also called as methanol. This is common name and that is IUPAC. Okay, ethyl alcohol मतलब ethanol. Any doubt here? Then third, remove E and write OL. थर्ड कौन सा है? अल्डिहाइड. R single bond CHO. Okay, but this CHO have the structure like this.
C double bond O, single bond H. Okay. Here from the alkane we should remove this E and write Al. Okay. Then first देखो CH3 single bond CHO. First of all, count this number of carbon atom. Then how many number of carbon atom are here? 2. Include this functional group carbon also. Two groups are two hydrogen are two carbon are there. So root word क्या आएगा? Eth, इथैन. E कट करके क्या लिखना है? Al, इथेनॉल. नल नैल जो बोलना है, इथेनॉल. ओके. CH3 single bond CH3 single bond CH2 single bond CHO. How many carbon number are there? क्या आएगा रूट वर्ड? प्रोपैन Al, प्रोपेनॉल. नल नाल जो बोलते हो. ओके. प्रोपेनॉल. कुछ डाउट है? फोर्थ वन कीटोन. क्या है? R single bond COR. Okay. This R means what? Alkyl group. अल्केन में से E कट के क्या लिखना है? ONE. Remove E from alkane and write CH3 single bond CO single bond CH. How many number of carbon are here? 3 number of carbon. तो क्या आएगा? प्रोपैनॉल. प्रोपैनॉल. ओके. समझ में आ गया? CH3 single bond CO single bond CH2 single bond CH3. Butanol. Simple. Number of carbon atom and group. Number of carbon atoms and group. If you know it, then you can write and find any any functional group. Last one. Okay. What is the carboxylic. What? R single bond COOH. Remove E and write oic acid. Okay. First H single bond COH. How many carbon number are? Methanoic acid. Methanoic acid. CH3 single bond COOH. क्या आएगा? इथेनोइक एसिड. इसको क्या कहते हैं हम? एसिटिक एसिड. हाई परसेंट करा तो क्या कहेंगे? विनेगर. विनेगर जो फूड में हम यूज करते कि नहीं, ये होता है वो इथेनोइक एसिड. इन दिस वे वी लर्न हियर हेलो अल्केन फंक्शनल ग्रुप. हेलो अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. एनी डाउट? Thank you.